नेक्स्ट प्रिंसिपल है सिस्टम आर्किटेक्चर इज रोल कोलैबोरेशन. So far, we have focused on the central role the teams play in designing and architecting system of scale. Now we will touch on the role of the senior domain experience system architect we mentioned earlier. Sorry. Fortunately, enterprise agility is not a zero-sum game, and there is room for all who can contribute to the best possible technical solutions. After all, we are building systems of enormous complexity even when we keep them as simple as possible. So, why not leverage the skills of those external team members who have the experience to match the challenges the team face? Okay. How do we incorporate them into a team centric agile model? We should remember the parallel that exists between organization and the systems architecture that organizations create. Conway's law states that organizations with design systems are constrained to produce designs which are copies of the communication structures of those organizations. Okay. While this law may seems to imply negative, that needn't be the case. For example, in object-oriented system development, we designed systems of collaborating objects structured around well-defined interfaces which work together to create an output that is greater than the sum of its parts. The same approach can be applied when working together to develop a system architecture. अब देखिए सिस्टम आर्किटेक्चर जैसे कि हम लोग कोई सिस्टम कोई भी सिस्टम आर्किटेक्चर कोई भी डिजाइन करते हैं तो क्या होता है कि वो किस कैसे मतलब उस सिस्टम को जो आर्किटेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको बनाते हैं तो किस हिसाब से हम लोग उसको डिजाइन करते हैं, तो वो किसका मतलब ओवरऑल रिजल्ट किसका होता है, जो टीम्स कोलैबोरेशन यानी कि जो टीम्स हैं, जो टीम है, डेवलपमेंट टीम है, स्टेक होल्डर्स हैं, प्रोडक्ट ओनर है, यानी कि जितने भी उस प्रोडक्ट से जुड़े हुए जितने भी पीपल्स हैं, यानी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उस प्रोजेक्ट के, उनके साथ में टीम हो प्रॉपरली टीम उनके साथ प्रॉपरली मीटिंग होती है, ठीक है, डिस्कशन होता है, फिर उसके हिसाब से फिर हम लोग कुछ डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, और एक मतलब एक उसका ढांचा तैयार करते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ठीक है। तो आर्किटेक्चर किस पे डिपेंड करता है, टीम कोलैबोरेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। पीपल्स आपस में डिस्कशन करते हैं, डिस्कस करने के बाद फिर एक हम लोग एक ओवरव्यू तैयार करते हैं कि इस तरह का हमारा सिस्टम होना चाहिए, इस तरह का हमारा आर्किटेक्चर होना चाहिए। तो ये देखिए डायग्रामिकली इसको समझाया गया है, सिस्टम आर्किटेक्चर इज अ रोल कोलैबोरेशन। अब देखिए सिस्टम आर्किटेक्चर कस्टमर्स जो है प्रोडक्ट मैनेजर से इंटरेक्ट करते हैं, अपनी जो भी अपने फीडबैक्स होते हैं, जो अपने रिक्वायरमेंट्स होती है वो प्रोडक्ट मैनेजर को पेश करते हैं, ठीक है। सिस्टम पोर्टफोलियो टीम जो है, जो टीम होती है आपकी, वो कस्टमर से इंटरेक्ट करती है उनके फीडबैक के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट ओनर और प्रोडक्ट मैनेजर उस प्रोडक्ट के विजन को डिसाइड करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट के विजन प्रोडक्ट ओनर और प्रोडक्ट मैनेजर प्रोडक्ट के विजन को डिसाइड करते हैं। प्रोडक्ट ओनर जो है, प्रोडक्ट ओनर किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो क्या बोलते हैं आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने आइडियाज देते हैं, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो पेश करते हैं, ठीक है। फिर स्टोरी क्रिएशन यहीं से स्टार्ट होता है, प्रोडक्ट ओनर अपनी रिक्वायरमेंट्स देते हैं और फिर जो है जो टीम होती है वो उस पर स्टोरीज क्रिएट करती है, उन रिक्वायरमेंट्स को अपने क्या बोलते हैं जो बैकलॉग होता है उसमें मेंटेन करती है, उसको वहाँ पर नोट करती है। कंपोनेंट टीम होती है, एजाइल मास्टर होता है, ये सारे क्या है स्टेक होल्डर्स हैं। तो
ये सारे जो हैं, ये जो सिस्टम आर्किटेक्चर है, इन सब में सबका इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि सिस्टम आर्किटेक्चर किस सबकी टुगेदर वर्किंग है, मतलब सब लोग मिल करके उसके आर्किटेक्चर के लिए, ओवरऑल आर्किटेक्चर के लिए हर कोई उसके लिए मतलब ये पूरी टीम जो होती है, हर कोई इसको लिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। तो सिस्टम आर्किटेक्चरल इनपुट्स, technical architect, system architect, then values, stories and architecture spikes। तो ये किस में आ रहा है, डिजाइन में, एक सेकेंड शायद में भी कुछ। ठीक है। डिजाइन स्पाइक, तो ये आपका सिस्टम है, सिस्टम आर्किटेक्चर है, टेक्निकल आर्किटेक्चर है, टीच लीड आर्किटेक्ट है, सिस्टम आर्किटेक्ट है। तो ये क्या है, आर्किटेक्चरल इनपुट्स हैं ये सिस्टम के। ठीक है। तो सिस्टम जो है, जो डेवलपमेंट सिस्टम का जो आर्किटेक्चर जो तैयार किया जाता है, सिस्टम जो डेवलप किया जाता है, वो इन सब के कोलैबोरेशन से, इन सब के ये सब लोग मिल करके उसको, उस सिस्टम को बिल्ड करने में, मतलब ये सारे लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। In this illustration, system architecture is a role collaboration between the system architect and technical leads of the component team that write the code. These system level teammates work together with the component teams to decide what the architecture will look like. And when in doubt, they code it out with a series of design spikes inside iteration or release boundaries. With the support of the product owner, design spikes are mixed in the backlog based on the priorities the team feels is appropriate. This is one of the reasons effective product owner often have a high degree of technical experience. Using this model, a consensus emerges as to how to build the system that is about to be deployed. As an example, let's look at a single sign-on architectural consideration from real-world experience. In this application, the component teams needed to implement SSO from their system to an external web service. The component teams had little experience in web SSO, having had no prior need for it in their system. The system architect had broader experience and perhaps more importantly had been researching SSO options prior to the release planning session where the discussion was initiated. There were many options available and the system architect already formed an opinion based on prior investigation. But even with that input, a lively discussion ensued with who decides, the team closest to the implementation or the more experienced architect who is removed from the implementation. The answer must come through collaboration and agreement between the parties, s- supported as necessary by evaluation metrics, footprint, recurring cost, level of security, etc. And when necessary, a series of design spikes to test each proposed solution. If a design spike or two could not prove the feasibility of one choice or another, then it's unlikely the solution chosen is the simplest architecture that can possibly work. So, if we want to beat the competition to market, we must work together, maximize the contributions of all the team players, and master the complex system we are creating today. To reach these goals, it's crucial to engage system architects in the solution.